गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले Kubernetes फॉर बिगिनर्स। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले Kubernetes का क्लासेस। एंड इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम देखने वाले हैं कि कैसे Kubernetes हमको DevOps इंजीनियरिंग में हेल्प करता है, सिंस आई एम अ DevOps इंजीनियर एट रिलायंस जियो। सो हाउ Kubernetes हेल्प्स इन ऑर्केस्ट्रेटिंग ऑफ कंटेनर्स, एंड हम ये सब देखने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले वीडियो से। हम देखते हैं कि व्हाई हाउ डॉकर हेल्प्स एंड हाउ डॉकर वर्सेस कुबरनेटिस। सो इसमें हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड कुबरनेटिस। So like why people choose Kubernetes, why companies choose Kubernetes over Docker. So the first feature is like auto healing, which is not supported in Docker, and Kubernetes provides it. Like suppose अगर कोई कंटेनर inside a pod अगर वो किल हो जाता है या फिर वो क्रैश हो जाता है तो Kubernetes ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट्स इट। सो वो फीचर है Kubernetes में, बल्कि डॉकर में नहीं है। ऑटो स्केलिंग, सपोज अगर ट्रैफिक बढ़ रही है एंड कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में पॉड्स में अगर हमको स्केल करना है पॉड्स को, लाइक इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉड्स हॉरिजॉन्टली, लाइक इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉड्स। सो एट दैट टाइम डॉकर डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी बट कुबरनेटिस प्रोवाइड्स इट। लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग मतलब अगर सपोज हमको बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है एक ही वेबसाइट में जो कि कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर है, and if you want to increase the number of pods, like increase the or we have to do vertical scaling, like increase the CPU and memory usage. So वो सब features नहीं है डॉकर में, बल्कि Kubernetes में। Enterprise support, like we provide enterprise level support for Docker, uh, which is paid, while for Kubernetes it is not paid. It is uh, we are- it has vendor support. मल्टी होस्ट ऑर्केस्ट्रेशन इन डॉकर, डॉकर स्वार्म हम यूज करते हैं फॉर मल्टी कंटेनर हैंडलिंग, वाइल कुबरनेटिस मैनेजेस कंटेनर्स अक्रॉस क्लस्टर, वो सेल्फ हैंडल करता है। बल्कि डॉकर में हमको डॉकर स्वार्म यूज करना पड़ता है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग मीन्स मैनुअल इंटरवेंशन, लाइक इन डॉकर हमको मैनुअली हमको कंटेनर्स को रिस्टार्ट करना पड़ता है, बाकी कुबरनेटिस इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड रिप्लेसेस द फेल्ड कंटेनर्स and pods. While it has rolling updates in Kubernetes, while Docker does not support rolling updates. Resource optimization. So it automatically Kubernetes it handles resources. If we specify the limit and the request, it automatically handles the resource limits. But Docker, if some container or pod is using if some container is using more memory, so it automatically clears the other containers, which is not proper. Like it can particular web application can go down. So and this is optimization not proper in Docker, while Kubernetes handles resource optimization properly. Docker has basic security policies, while Kubernetes has RBAC, cluster role and role bindings. So and for monitoring and login needs external tools in Docker, while Kubernetes we can integrate Prometheus and Grafana.